So when we started off with the transport mechanisms of transport, we talked about the passive mechanisms and active mechanisms. The passive mechanisms, diffusion and osmosis, they only rely on the kinetic energy the particles already possess, while those mechanisms which are active, they require energy that is produced by respiration from the cell, whether that respiration could be aerobic or it could be anaerobic. Then we started off with diffusion. हम लोगों ने बात करी थी कि भाई diffusion क्या होता है? Diffusion is the movement of particles from a region of higher concentration towards a region of lower concentration until there is no net movement occurring. No net movement occurring का मतलब क्या हुआ कि अगर movement हो भी रही है तो कोई gain और loss नहीं हो रहा. Make sense? Now let me give an example. हम लोगों ने कहा था कि भाई we showed you this diagram. We said that at corner A there were 100 mole per dm cube of particles. At corner B there was 0 mole per dm cube of particles. So as the particles were moving from A to B, they would move, and you know what's going to happen is their concentration is going to become equal. Once this concentration becomes equal, it does not mean कि अब वो particles move करेंगे ही नहीं. अब होगा क्या कि अब जितने पार्टिकल्स ए से बी की तरफ मूव कर रहे हैं उतने ही पार्टिकल्स बी से ए की तरफ मूव कर रहे हैं. मेक सेंस? तो मूवमेंट तो हो रही है लेकिन कोई गेन या फिर कोई लॉस नहीं हो रहा. मेक सेंस? So we talked about what rate was. Rate is anything done in a particular time. We talked about what concentration was. It was number of particles per unit, let's say volume. And then what we talked about were rates of diffusion. रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है कि भाई कितने पार्टिकल्स हमारे पास पर यूनिट टाइम मूव कर रहे हैं. जितने ज्यादा पार्टिकल्स कम टाइम में मूव करेंगे उतना ही ज्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा. जितने पार्टिकल्स देर में मूव करेंगे उतना रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हो जाएगा हमारे पास, कम हो जाएगा. Now, since diffusion is a passive process, there are different environmental factors that affect the rate of diffusion. We talked about five factors: the difference in concentration, temperature, surface area to volume ratio. ये जो तीन फैक्टर्स हैं, अगर ये इंक्रीज होंगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी इंक्रीज हो जाएगा. हाँ, अगर हमारे पास डिस्टेंस या फिर साइज ऑफ पार्टिकल्स जो मूव कर रहे हैं वो हमारे पास इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन हमारे पास क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज गोइंग टू डिक्रीज. हमने बात करी थी कि अच्छा हमारे पास जितना ज्यादा डिफरेंस होता है कंसंट्रेशन के अंदर उतने ही ज्यादा हमारे पास रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा. जितना हमारे पास टेम्परेचर बढ़ जाएगा उतनी ही पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ जाएगा. वेयर वी स्टॉप वाज the surface area to volume ratio. All right. Now, whenever we talk about surface area to volume ratio, सबसे पहले हमें बात ही पता होना चाहिए कि surface area to volume, surface area का मतलब क्या है basically. Whenever we talk about surface area is basically an area of an object that is exposed to the external environment. इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम एक आसान सी मिसाल लें तो मैंने कहा कि भाई as an adult human being, I am made up of about 1 trillion cells. मेरा जो external environment है, that is the atmosphere. Am I exposing all of these cells to the external environment? नहीं, I'm only exposing barely a percentage of it. मेरी skin. Make sense? Or skin B, it's not completely, exposed. It's 90% of it is covered. Only my forearms, my face, and my feet are exposed एक तरीके से. तो वॉल्यूम तो बहुत ज्यादा है लेकिन वो जो सरफेस एनवायरनमेंट के अंदर एनवायरनमेंट की तरफ एक्सपोज हुई है वो कम है. दिस इज व्हाट वी मीन बाय सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो. ठीक है, अब इसको एक और तरीके से समझो, लेट्स से आई टेक अ लंप ऑफ शुगर. द शुगर दैट वी हैव, हमारे पास जो चीनी होती है वो पिसी हुई होती है. इट्स इन स्मॉलर फ्रैगमेंट्स. एक तरीके से अगर हम लोग देखें, especially in England, they don't use the chini, they use these lumps of sugar. So let's say मेरे पास ये एक lump of sugar था. So let's say I had this big of a lump of sugar, right? Acha. Now this sugar or this lump of sugar is going to have many molecules of sugar. अब मैंने क्या देखा, मेरे पास कुछ sugar molecules हैं जो कि corners के अंदर है.
राइट। और कुछ शुगर मॉलिक्यूल्स हैं विच आर ऑन द इनसाइड, ठीक है, जो अंदर की तरफ है। अब लेट्स से अगर मैं इस लंप ऑफ शुगर को वाटर से एक्सपोज करते हैं, फॉर एग्जांपल इफ आई सराउंडेड विद वाटर, इफ आई पुट इट इनटू अ ग्लास ऑफ वाटर, व्हाट्स गोना हैपन? जो हमारे पास सी ओनली दो शुगर मॉलिक्यूल्स जो कि बाहर की तरफ है ना, पहले वो डिसॉल्व होंगे, देन द शुगर क्यूब्स दैट आर ऑन द इनसाइड, फिर उनकी बारी होगी कि वो डिसॉल्व। बात समझ में आ रही है? अब कहने का मकसद क्या है कि देखो, पहले ये वाले शुगर मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व होंगे, फिर ये वाले होंगे, फिर ये वाले होंगे, फिर आखिर में जाके द शुगर वुड बी कंप्लीटली डिसॉल्व। लेकिन अब मैं क्या करूं? Let's say I decide to, break this sugar or this large lump of sugar into four different pieces or into four different smaller pieces. कहने का मकसद क्या हुआ? मैंने इस शुगर मॉलिक्यूल के चार छोटे छोटे पीसेस बना दिए, चार टुकड़े बना दिए। Okay, what I'm gonna do is I'm gonna put them right here. ठीक, when I have these four different pieces of sugar, अब मैं क्या देख रहा हूँ कि इसके अंदर भी कुछ शुगर मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एक्सपोज हो रहा है, एंड दे आर द वेरी सेम शुगर मॉलिक्यूल्स उस लम्प के अंदर भी हो रहा है। बात समझ में आ रही है? आई एम मेकिंग कंपैरिजन हियर, स्टे विद मी हियर, समझ में आएगी बात। अब मेरे पास कुछ शुगर मॉलिक्यूल्स हैं जो एक लार्जर लंप ऑफ शुगर के अंदर और छोटे वाले शुगर जैसे पीसेस के अंदर, दोनों के अंदर, इफ आई वुड सराउंड देम इन वाटर, दे आर गोइंग टू गेट एक्सपोज्ड। लेकिन जब मैंने शुगर को बीच में से काट दिया, what I did was I exposed new sugar molecules, these ones, जो कि लार्जर लंप ऑफ शुगर के अंदर एक वक्त में एक्सपोज नहीं हो रहे थे। राइट right? अब क्या हुआ? क्योंकि मैंने ज्यादा मॉलिक्यूल्स अब पर यूनिट टाइम इस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से एक्सपोज कर दिए, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी क्या हो जाएगा हमारे पास? राइट right? हमारे पास क्या हो जाएगा? हमारे पास रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ जाएगा। मेक सेंस? डू वी ऑल गेट दिस? ऑलराइट, गुड इनफ, गुड इनफ। अच्छा जी, सो ओके, गुड इनफ, गुड इनफ। ओके, नाउ नाउ अब नाउ दैट वी नो दिस, अब ये एक और जगह पे भी अप्लाई हो सकता है। तो देखो, हम लोग बात किसकी कर रहे हैं कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से एरिया कितना एक्सपोज हो रहा है ना। इन माय सेल्स, diffusion can also occur through membranes, right? For example, मेरे पास एक सेल है, फॉर एग्जाम्पल इट लुक्स समथिंग लाइक दिस, राइट? इसके बाहर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन, ग्लूकोज इज यूज बाय द सेल्स फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। इसके बाहर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज्यादा है, ऑन द इनसाइड द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इज लो। मेक्स सेंस? नाउ लेट्स से ये जो ग्लूकोज है ना, ये मेम्ब्रेन के इस पर्टिकुलर पार्ट से आ रहा है, राइट? सो आई हैव अ पर्टिकुलर मेम्ब्रेन, एंड in this particular membrane few molecules of glucose can move across. So what happens is, let's say हमने क्या देखा? हमने कहा एक सेकंड के अंदर, let's talk about per unit time, per second, एक सेकंड के अंदर, let's say 1, 2, 3, 4, 5 molecules of glucose can enter into the cell. अब मुझे क्या करना है? मैं चाहता हूं कि यार सेल की जो टोटल वॉल्यूम है ना वो चेंज नहीं हो,
डिस्टेंस इतना ही रहा है, मतलब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ अगर हमारे पास 1 मिलीमीटर की मेम्ब्रेन थी फॉर एग्जांपल, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी लार्ज मेम्ब्रेन, बट लेट्स से अगर 1 मिलीमीटर की मेम्ब्रेन थी, तो 1 मिलीमीटर की स्पेस के अंदर, ये 1 मिलीमीटर की मेम्ब्रेन के अंदर कितने पार्टिकल्स ऑफ ग्लूकोज डिफ्यूज कर रहे हैं पर सेकंड? 1 2 3 4 5। नाउ व्हाट आई वांट इज कि इस इतनी ही जगह पे, let's say I want more than 5 glucose molecules to diffuse inside. Is that possible? Can I do something? Can I do something with the membrane that would allow these glucose or more number of glucose molecules to move inside? Is there any way through which I can do that? No, I cannot. Tear it, okay. And besides tearing, अच्छा, एक और मिसाल लेता हूँ ना, इसको एक और तरीके से समझता हूँ. Let's say I have a space of 1 मिलीमीटर, इतना. इस 1 मिलीमीटर के स्पेस के अंदर कितनी बड़ी मेम्ब्रेन आ सकती है? 1 मिलीमीटर की मेम्ब्रेन आ सकती है. इज देयर एनी वे थ्रू विच मैं इस 1 मिलीमीटर के स्पेस के अंदर ही एक 5 मिलीमीटर की मेम्ब्रेन रख दूं? इज देयर अ वे आई कैन डू दैट, कि fit a membrane that is 5 millimeters long into a space that is let's say 1 millimeter? ah वेरी गुड बच्चे. डिस्टेंस इंक्रीज करके, डिस्टेंस कैसे इंक्रीज करूंगा मिनाइल में? How am I going to increase the distance? तो भाई मुझे मुनीजा ने बताया कि सर अब एक काम करें, सरफेस एरिया इंक्रीज करें. और कैसे करूंगा? मुझे मारूफ ने बताया कि सर हाउ अबाउट यू फोल्ड दिस मेम्ब्रेन. मेरा जो कवर्ड के अंदर एक कंपार्टमेंट है वेयर आई कीप माय jeans. A single gene cannot fit into it. So what do? I fold it. And once I fold it, I can keep more than one pair of jeans. बात समझ में आ रही है? लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने क्या करा, अब इसको देखो. हमने इस 1 मिलीमीटर के स्पेस में जो मेम्ब्रेन थी हमारे पास, उसको फोल्ड कर दिया. उसको क्या कर दिया? फोल्ड कर दिया. वेरी गुड. नो नो नो, यस, द लॉन्गर मेम्ब्रेन, नॉट द बिगर मेम्ब्रेन. अब इसको देखो, अब इसको यहाँ देखो मेरे बच्चा लोग. मेरे पास इतनी सी जगह के ऊपर कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज आ रहे थे इस मेम्ब्रेन के ऊपर? 5 मॉलिक्यूल्स, राइट. लेकिन अब अगर मैं इसको एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के अंदर फोल्ड कर दूं, so if I'm going to fold into finger like projections, now 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 of glucose diffuse this membrane at a unit time. Makes sense? So now glucose can, and क्या हुआ? How what? So exactly as we discussed in chapter 1 as well. When you के ऊपर. So अगर हम लोग यहाँ देखें, we discuss this particular part that we call as what? That we call as the microvilli. माइक्रोविलाई क्या करता है हमारे पास? जो हमारे पास मेम्ब्रेन का एरिया है ना, जो टोटल एरिया तो सेम रहता है, लेकिन उसके अंदर एक ज्यादा लंबी मेम्ब्रेन आ जाती है. जिसकी वजह से क्या होता है मेरे पास जो एब्जॉर्प्टिव सरफेसेस है ना, वो सरफेसेस जो चीजों को एब्जॉर्ब कर रही हैं, एंड अगेन हाउ आर दे एब्जॉर्बिंग, हाउ आर द पार्टिकल्स बीइंग एब्जॉर्ब्ड? दे बीइंग एब्जॉर्ब्ड बाय डिफ्यूजन. वो इंक्रीज हो जाता है. आमने बेटे बात समझ में आई? कि लेट्स
से अगर इतना ही एरिया इस तरफ ले लूं तो less particles are going to move across, right? But the surface area to volume. All right. I'm not ready to we get this. Okay, now. Okay, is the voice fine now? अब ठीक आ रही है आवाज? Still lagging? Uh, okay. All right, is the voice fine now, मेरे बच्चों? आवाज ठीक आ रही है? Did it get any better? Okay, good enough, good enough. चलो. So हम हमने क्या देखा कि जब भी हम लोग सरफेस एरिया को इंक्रीज करेंगे, what are we increasing are the number of what absorptive surfaces, right? वो surfaces जो क्या कर सकती हैं, जो absorption कर सकती हैं, which means more particles can diffuse per unit time, which is going to increase the rate of diffusion. Make sense? I'm not ready. Do we get this? ये वाली बात समझ में आई बच्चा? Okay. Now the next let's say factor that affects the rate of diffusion is distance. Now it's pretty understandable कि देखो जितना ज्यादा distance हो जाएगा, the more time it will take for particles to move. Make sense? तो कहने का मकसद क्या हुआ? Let's say if let's say one of you and I, we are driving the same car at the same speed, or I have to travel about 10 kilometers and you have to travel 5 kilometers, right? That's why the alveolar capillary of one's health. Like, very good, Rehan. तो अपनी destination में पहले कौन पहुंचेगा? Me, who has to cover 10 kilometers, or the person who's going to cover 5 kilometers? Now, remember, we're traveling at the same speed. Very good, very good. Right? So according to Leiber,
द पर्सन हु हैज टू ट्रैवल 5 किलोमीटर्स, डिस्टेंस कम है ना, तो कम टाइम लगेगा। हमें पता है कि देखो, जब भी हमारे पास टाइम बढ़ जाएगा तो हमारे पास रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जितना डिस्टेंस बढ़ाओगे उतना टाइम बढ़ेगा और उतना ही हमारे पास रेट ऑफ डिफ्यूजन भी कम हो जाएगा। एंड द लास्ट थिंग इज साइज एंड मास ऑफ द पार्टिकल्स। जितना साइज और मास बढ़ाओगे पार्टिकल्स का, उतना ही हमारे पास रेट ऑफ डिफ्यूजन कम हो जाएगा, बिकॉज हेवियर पार्टिकल्स दे टेक मोर टाइम टू मूव अक्रॉस। ओके, कम बैक। जी जी, मुझे गिव मी अ मिनट। दिस वन मनीषा। ठीक है, सो दीज वर द 5 फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है जी। Now that we're done with diffusion, so let's move this up. uh अब let's talk about osmosis। ठीक है,